In this particular lecture, today we will discuss about the supercharging limitations. What are the limitations of supercharging for SI and CI engines? As we have discussed in the last lecture, what is supercharging? Supercharging क्या होती है and what are the various method of supercharging? So the following are the limitations of supercharging for SI and CI engines. First one is for petrol engines, the main limitations of supercharging is knocking. जो पेट्रोल इंजन्स होता है उसके अंदर बेसिकली जो सुपर चार्जिंग हम परफॉर्म करते हैं, देन वी सप्लाई द मोर डेंस और हाईली प्रेशराइज्ड एयर टू द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स. दैट्स वाई the burning of the fuel will take place quickly, and due to which more heat will release, and due to more heat more power will generate, and we will get the more speed at the wheel of the vehicle. As we know, during supercharging pressure and temperature of air and fuel increases, which reduces ignition delay and results in engine knocking problems. Next one is for diesel engines, the main limitations of supercharging is because of thermal loading. In this case, the temperature of piston and cylinder are very high, and because of this it results in scuffing of piston rings and wearing of cylinder liners. जब भी डीजल इंजन्स के अंदर सुपरचार्जिंग परफॉर्म की जाती है तो ड्यू टू द problem of thermal loading, the temperature of the piston and cylinder will increase at very high range, due to which the problem of scuffing of piston rings and wearing of cylinder liners will take place. Also, because of higher pressure loads on the bearing will increase. Next one is, in general for supercharged engines, because of high pressure and high temperature of product of combustion, the engine component are to be designed to take up higher pressure and temperature. The engine component are to be made of better materials so that they can withstand high temperature encountered in supercharged engines. तो अगर हम इन जनरल की बात करें कि जो सुपरचार्ज इंजन्स होते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर and high temperature of products of combustion, the engine component are to be designed to take up higher pressure and temperature. The engine components are to be made of better materials so that they can withstand high temperature encountered in supercharged engines. Point number 4, if the air pressure is to be increased, पावर इनपुट टू द सुपरचार्जर इज़ टू बी इंक्रीज्ड. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा इंजन के अंदर तो जो पावर इनपुट है टू द सुपरचार्जर दैट विल आल्सो इंक्रीज. दैट्स वाई दिस इज आल्सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सुपरचार्जर. नेक्स्ट वन इज ड्यूल फ्यूल इंजन्स. ड्यूल फ्यूल इंजन्स इज द डीजल इंजन्स दैट कैन रन अप ऑन बोथ गैसियस एंड लिक्विड फ्यूल्स. यानी ऐसा इंजन जो गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स दोनों पे रन कर सकता है उसको डुअल फ्यूल इंजन्स कहते हैं. व्हेन रनिंग इन गैस मोड, जब ये गैस मोड में रन करता है, द इंजन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ऑटो प्रोसेस वेयर द लीन एयर फ्यूल मिक्सर इज फेड टू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. यानी जब ये गैसियस मोड में रन करेगा तो इंजन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ऑटो साइकिल. ठीक है, और जब ये लीन एयर फ्यूल मिक्सर में रन करेगा व्हेन इट इज़ फेड इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. तो ड्यूल फ्यूल नेचुरल गैस डीजल इंजन्स टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस एंड एमिशंस. ठीक है, तो दिस पेपर समराइजेस ए रिव्यू ऑफ ड्यूल नेचुरल गैस डीजल इंजन टेक्नोलॉजी कैरिड आउट फॉर द गैस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इन द पास्ट ड्यूल फ्यूल नेचुरल गैसेज इंजन्स हैव बीन relegated to a new small niche markets, but our review have been shown that the dual fuel engine technology has significant potential.
Potential advantage of dual fuel engine include diesel like efficiency, brake mean effective pressure with much lower emission of oxide of nitrogens and particulate matter. New technologies offer solution to the problem of poor efficiency and emission at light load. Dual fuel engines can be designated to operate interchangeably on natural gas with a diesel pilot or on 100% diesel fuel. Many existing diesels can be converted to dual fuel operation. Preliminary economic analysis show that such conversions could be justified from the fuel cost saving alone in applications such as railroad locomotives, marine vessels, mine trucks, and diesel power generation systems. Next one is dual fuel engines is an internal combustion engine in which primary fuel is mixed more or less homogeneously with the air in the cylinder. As in a spark ignition engines, unlike spark ignition engines, however, the air fuel mixture is ignited by injecting a small amount of diesel fuels. As the piston approaches the top of the compression stroke, this diesel pilot fuel rapidly undergoes pre-flame reactions and ignite due to that of heat compression just as it would in a diesel engines. The combustion of the diesel pilot then ignites the air fuel mixture in the rest of the cylinder. तो जो डुअल फ्यूल इंजन्स होता है इंटरनल कम्बशन इंजन के अंदर, जिसके अंदर जो प्राइमरी फ्यूल होता है वो मिक्स होता है मोर और लेस होमोजीनियसली विद द एयर इन द सिलेंडर, सिलेंडर के साथ में, सिलेंडर के अंदर एयर के साथ में मिक्स हो जाता है फ्यूल, जैसा कि ऐसा इंजन्स के अंदर होता है। अनलाइक ए स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो इग्नाइटेड होता है बाई इंजेक्टिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीजल फ्यूल, यानी इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट होगा बाई इंजेक्टिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीजल फ्यूल एज द पिस्टन अप्रोचेज टू द टॉप ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। जब पिस्टन आपका कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जाएगा डुअल फ्यूल इंजन्स के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड डीजल फ्यूल स्प्रे करेंगे सो दैट इग्निशन विल टेक प्लेस। दिस डीजल पायलट फ्यूल रैपिडली अंडरगोज प्री फ्लेम रिएक्शंस एंड इग्नाइट due to the heat of compression just as it would in a diesel engines. The combustion of the diesel pilot then ignites the air fuel mixture in the rest of the cylinder. ठीक है, तो because the air and the primary fuel are pre-mixed in the cylinder, क्योंकि इसके अंदर जो एयर है और जो प्राइमरी फ्यूल है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं इन द सिलेंडर के अंदर। तो डुअल फ्यूल इंजन्स हैव मैनी फीचर्स इन कॉमन विद एसआई इंजन्स, यानी ऑटो साइकिल से डुअल फ्यूल कई सारे कॉमन फीचर रखता है बिकॉज दे रिले ऑन कंप्रेशन इग्निशन ऑफ डीजल पायलट। हाउएवर दे आल्सो शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विद डीजल एज वेल एज सम यूनिक एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ देयर ओन, यानी कुछ तो क्या होते हैं इसके एडवांटेज होते हैं, कुछ इसके क्या होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं। Among the advantage of dual engine is that in most cases they can be designated in most cases among the advantage of dual fuel engine is that most of the cases में they can be designated to operate interchangeably on natural gas with a diesel pilot or on 100% diesel fuels. This makes them especially valuable in circumstances where use of natural gas is desired for environment or economic reason, but where gas supply may not be fully reliable. For example, a dual fuel truck could operate a compressed natural gas where that fuel was available, such a urban area suffering from service air pollution. If the truck had to travel beyond range of its compressed natural gas supply, however, it could still fall back on 100% diesel fuel. ठीक है, similarly, a generator set could operate most of the time
on relatively inexpensive pipeline, but when switch instantly to 100% diesel if gas supply were interrupted. Other potential application in which this capability could be important include diesel electric locomotive, marine vessels, farm equipments, construction and industrial equipments, engine using biogas, sewage gas और other variable gas supplies. तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि these are the advantage of dual fuel engines, and we will study further. Another advantage of dual fuel engine is the ease with which most exciting diesels can be converted to dual operations. ठीक है, ये इसके और एडवांटेज हैं dual fuel के. ठीक है, you should go through it. Thank you very much.